Hello, my dear students. So, we are back now with the next chapter from the macroeconomic syllabus, which is chapter number 8, Public Finance in India. See, it's not Mumbai, Mulund, Maharashtra, it's about Mera Bharat Mahan. And therefore, it's a macroeconomics part, right, students? So, जैसे national income था, you studied chapter 7 national income, right? देश की income calculation करना बहुत ही जरूरी है. वैसे ही same way, the central government who looks after the whole country, they need to take care of the finances, public finance, right? So public finance में आपका खर्चा, revenue, कर्जा कब आता है? जब expenditure is more than revenue. So we all know since independence India's budget is in deficit and therefore of course borrowings का part आता ही है. So this chapter has got a whole flow chart, a structure which covers the chapter. So here's the question which can come for 8 mark as well, which is reasons for growth in public expenditure. Reason for growth in public expenditure has come for 8 marks in the last year board paper. So जो 3 questions होते हैं उसमें से 2 attempt करने होते हैं, in which 1 question has come for 8 marks from this particular chapter, which is reason for growth. Otherwise वो question के अलावा जो हम पूरा एक flow chart पढ़ने वाले हैं, वो flow chart ही आपका पूरा chapter है. So this, if we can say, it's a very general knowledge type chapter where we are going to study about what is tax, what is borrowings, what is dividend, what is fines and penalties, which is the revenue to the government, what are the direct tax, what are the indirect tax, how is the government expenditure rising every day because of the number of reasons, right? So that's about the public finance in India. So public finance deals about the finances of the whole nation and not of a particular state. So in this you have two functions, one is obligatory and one is optional. Of course नाम से भी समझ में आता है, obligatory मतलब compulsory, ये functions तो government को follow करने ही है, ये functions तो perform करने ही है. So जैसे law and order, of course if we talk about defense, if we talk about, they are compulsory, they are obligatory functions. And then if we talk about the optional function, ये नहीं भी किया तो चलेगा, ये गवर्नमेंट के पास फंड्स रहेगा तो किया तो चलेगा. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ वी टॉक अबाउट, दैट्स एन ऑप्शनल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट. सो दिस वाज अ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन. So nature of public finance, which I told you that we are going to study about the whole flow chart. So here we'll talk about the flow chart. Acha, before we go to the flow chart, public finance has been defined by the various economics, so economists. So we have Dalton uncle who has defined public finances. Then we have Finlay Shiraz, which you have to study. So Shiru काका ने क्या सिखाया हमें, that it is a principle underlying the spending, खर्चा, raising revenue on करना of funds, of course कौन करने वाला है, by the public authorities, that is nothing but the public finance, right? So there is a distinguish between public and the private finance, students. So here the public, of course we are talking about the society, here we are talking about the personal interest, the personal companies, right? So this is the distinguish determined between the public finance and the private finance. But this is one of the important. For 2 marks, of course you have to write 4 points, but your additional points are also provided for you guys. Yes, so here comes the main question which I was talking about, the main structure. So you can see public expenditure, which is a very पहला part, खर्चे की बात हो रही है. अगर हम खर्चे की बात करें तो ये खर्चा फर्दर बाइफर्केटेड है. खर्चे के बाद आता है रेवेन्यू बिकॉज खर्चा इज मोर देन द रेवेन्यू. फिर कर्जे की बात आती है, डेट की बात आती है जो इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, फिर फिस्कल पॉलिसी की बात आती है और फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे बजट के बारे में होता है. सो दिस एक्सपेंडिचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्चुअली 6, बट यू हैव टू स्टडी ओनली 4 राइट नाउ. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, जो दो नहीं है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड. रेवेन्यू बार बार लगातार वाले खर्चे, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे बार बार लगातार, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंस, बट वो ब्रिज पे बार बार रिपेयर मेंटेनेंस करेंगी, वो रेवेन्यू. लेकिन असेट बिल्ड किया, कैपिटल. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स उसके वजह से बैलेंस शीट पे काफी इंपैक्ट आता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने पीएनएल में जाते हैं ना ये सारे खर्चे, बिकॉज ये बार बार लगातार होते रहते हैं. ये जो रेवेन्यू और कैपिटल खर्चे हम करते हैं, ये आगे किसको डील करते हैं? जैसे मैंने ब्रिज बनाया, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, दैट्स अ डेवलपमेंटल खर्चा. मैंने पुलिस स्टेशन में कलर किया, रिपेयर्स मेंटेनेंस, कलर किया, इससे कोई डेवलपमेंट आने वाला, दैट्स अ नॉन डेवलपमेंटल खर्चा. मैंने प्लान करके ब्रिज बनाया था, प्लान खर्चा. कोविड आ गया, मुझे पता नहीं था, गवर्नमेंट ने काफी कोविड सेंटर्स बनाए, दैट्स अ नॉन प्लान खर्चा.
So that's a part of the kharcha wala part. Coming to the revenue wala part, which is further classified into tax and non-tax. This is a compulsory payment made by the citizens to the government. This is optional. Tax is further classified into direct tax and the indirect tax. Direct tax, this is just for your understanding. आपके महाराष्ट्र स्टेट के बुक में do you know के डब्बे में दिया है. So do you know, if you remember, it is just for general knowledge. Proportionate income 10% से बड़ा, tax 10% से बड़ा. Progressive tax slab बढ़ेगा, इनकम स्लैब बढ़ेगा, आपका टैक्स भी बढ़ेगा. रिग्रेसिव, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका टैक्स कम हो जाएगा. हमारे देश में कौन सा होता है स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव. इनकम स्लैब जैसे ही बढ़ेगा, आपका इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा. That's a good measure, right? The more you earn, the more you pay tax to the government. The less you earn, the less you pay tax to the government. The very lesser you earn, you don't pay tax to the government. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली पे होते हैं. जैसे इनकम टैक्स की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आपने डायरेक्टली पे किया हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्स विच इज एग्जांपल जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स. आप मूवी देखने गए, आपने एंटरटेनमेंट टैक्स पे किया तो आपने बॉक्स ऑफिस में टिकट पे किया, आपने ऑनलाइन बुक की. नाउ दे आर गोइंग टू देन फॉरवर्ड इट टू द गवर्नमेंट. सो यू हैव पेड इट, बट यू हैव पेड इट indirectly and therefore it is a part of indirect tax. Direct tax में of course there is no quid pro quo. मतलब students, you do not get anything in return. मिलेगा और कुछ नहीं. But indirect tax, when you paid, you get either goods, you get either service, you get either the entertainment in return. So that's a part of the indirect tax. Here you cannot shift the burden. ए चलना मेरे बदले, ए आकाश तू पे कर देना, ए नहीं चलेगा, नहीं कर सकता. लेकिन indirect tax, the producer can shift the burden to the consumer. ए मेरा रिकॉर्डिंग खरीदा ना, ये चल अब टैक्स में नहीं, ये चल मेरा फीस है प्लस जीएसटी, तो तेरे को पे करना पड़ेगा. तो हम वो बर्डन को शिफ्ट भी कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट. डिस्टिंग्विश बिटवीन डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. ये हो गए हमारे टैक्स की बात. जब हम नॉन टैक्स की बात करते हैं ऑप्शनल, तो जैसे फीस हो गया. पासपोर्ट फीस फ्री थोड़ी होता है, गवर्नमेंट के लिए वो एक रेवेन्यू है. ऑफ कोर्स जो बाहर जा रहे हैं वही बनाएंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं बनाएंगे. पासपोर्ट एप्लीकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इट्स अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज, ऑफ कोर्स फॉर दैट इफ वी पे, रेलवे टिकट्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है बट हम पे करते हैं, राइट. टिकट लेस ट्रैवलर्स अलग बात है, पकड़ेंगे तो पेनल्टी लगेगी. स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लिवाई. अचानक से कोई आने वाला रहता है, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो टाइम पे अचानक से रोड्स अच्छे बिल्ड हो जाते हैं. स्पेशल केसेस के अंदर अल्कोहल वगैरह पे ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, ज्यादा सेस लगाया जाता है. गवर्नमेंट कहती है, हम सोचते हैं कि हमारे सिटीजन्स ना पिए, बट ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स रेवेन्यू बढ़ता है. पता है ना, वो तो पीने इच वाला है. आई होप यू आर गेटिंग इट. गिव्स, ग्रांट्स, डोनेशंस जो मिलते हैं ऑफ कोर्स हम मांगते नहीं है, ऑप्शनल है वो, नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट में आएगा. बोरिंग्स ऑफ कोर्स फॉर टुडेस एंट्री, आज पैसा आया, रिपेबल है, आज पैसा आया ना, राइट. Then we have fines and penalties. सब फीस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पे किया आपने, फीस नहीं अप्लाई किया, पुलिस ने आपको पकड़ा, लाइसेंस के लिए नहीं, आपके पास फाइन्स पेनल्टीज लगेगी. दैट्स अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बट दैट्स अगेन दैट्स अ नॉन टैक्स खर्चा. ये हो गए हमारे रेवेन्यू का पार्ट, राइट. मूविंग अहेड विद द कर्जे वाला पार्ट स्टूडेंट्स. सो हियर व्हेन द खर्चा इज मोर देन द कर्जा, सो इन पब्लिक डेट there's an internal debt and there's an external debt students. Internally अगर किसी ने पैसा लिया है, जैसे RBI has borrowed funds internally, then it's a part of internal debt. If we have taken it externally from World Bank or from IMF during the 1991 era, during the LPG era, then that's a part of एक्सटर्नल डेट. ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होते हैं बिकॉज वो हमारे बस के बाहर है. इंटरनली कॉम्प्लेक्सिटीज उतने कम रहेंगे बिकॉज अपने ही लोग रहेंगे, देश के अंदर की बात है. टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है विच इज फुल्ली टेकन केयर बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सेम फिस्कल पॉलिसी इज टोटली टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट. आप देख सकते हो उसके जो तीनों पैरामीटर्स है वही तीन पैरामीटर्स हमने पढ़े, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट. Talking about financial administration, it is all about the budget. We all know budget has been derived from the French word baguette, which means a bag or a wallet or a purse containing financial proposal. जैसे the finance minister will carry it during the meeting, budget meeting. बहू खाता जो हम बोलते हैं, निर्मला सीतारामन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आपने देखा रहेगा उनके हाथ में. कोविड के टाइम से तो अभी थोड़े हम अपडेट हो गए हैं, तो हम बहू खाता के बदले हम टैब लेकर जाते हैं. देयर इज अ ट्रेडिशन दैट हम कुछ अच्छा चीज करने के पहले कुछ मिठाई या स्वीट खाते हैं. सो देयर इज अ हलवा इन मेकिंग. इट यूज्ड टू बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ February, but now it's first working day of March, which is probably 1st of March.
and if it's a public holiday, then of course it's a previous year, the next day then considered. It is prepared for one financial year which starts from 1st April and ends on 31st March. So this budget is classified into three types: balanced, surplus and deficit budget. Balanced budget where revenue is equal to your expenditure. This is very much हाइपोथेटिकल. एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ने प्रोपाउंड किया था. मुझे पता है एग्जैक्ट 100 रुपया आना, एग्जैक्ट 100 रुपया जाना पॉसिबल है कोई देश में बजट? इट्स वेरी मच हाइपोथेटिकल. रेवेन्यू और द सरप्लस बजट where your revenue is more than your expenditure, surplus profit में. डेवलप नेशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिसिट बजट, जो इंडिया इतने सालों से है, कर्जा आता ही इसलिए बिकॉज खर्चा इज मोर देन द रेवेन्यू. आमदनी 98, खर्चा रुपया. कमाया 100 रुपया, खर्चा के 120 रुपया, तो ऊपर के 20 रुपए कहाँ से आएंगे? बोरो करेंगे. बेग बोरो स्टील, ऑफ कोर्स देश की बात हो रही है तो बेग होगा, बोरो होगा, राइट? फंड्स बोरो हो जाएंगे. डेफिसिट बजट. सरप्लस बजट इज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. हाउ स्टूडेंट्स टैक्सेस बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, खर्चा उधर का उधर ही है. रेवेन्यू बढ़ जाएगा हमारा, खर्चा उधर का उधर ही है, तो सरप्लस बजट में हो जाएगा. डेफिसिट बजट इज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, राइट? टैक्सेस कम कर देंगे, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा. अगर टैक्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, खर्चे उतने ही ज्यादा है. इट मे लीड टू डेफिसिट बजट देन. सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन: सरप्लस बजट यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिसिट बजट यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन. डीडी याद रखिए. लॉजिक मैजिक. I hope you are getting it. This whole structure of public finance is which you can see. इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे explain the types of non-tax revenue for 4 marks. Objective question: distinguish between direct tax, distinguish between internal external debt. This is just one paragraph, छोटू paragraph in the textbook. This is about the types of budget. Is this clear, students? Right? Yeah, so then in the next question we are going to talk about the important question which has come for 8 marks, which is reasons for growth in public expenditure. We see that in the next video.